of the curriculum, and we justify it. We say, oh, ये तो particular, this is curriculum khichdi, you have to eat. 19,200 hours of khichdi into और एक और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं. वायलिन कैसे बजती है उसकी फिजिक्स को इन्वेंट करने के लिए एक अपनी मशीन बनाई थी. ठीक है, दबाइए दबाइए, आप दोनों हाथ यूज कर लीजिए, आप कुलीग्स को बुला लीजिए. बढ़िया है. अब मैं इसको उल्टा करता हूं. Alive from this sheet. I mean, all of these toys have been designed in our lab. When I spin it, if you focus here, ये बत्ती बनाता है. I will leave that as an exercise, I will not show it, but I can sort it by 3 also. This is binary mathematics invented in India in 2100 BC before Leibniz. Pingala's Chant Shastra. This is why your helicopters fly and don't crash. Eureka, Eureka, you know, whatever, right? If you ask Archimedes if he were alive today, what is your most important discovery that you have given to mankind? He will not say Eureka. He was the first person to have discovered the volume of a sphere. There is something that is jutting out, right? That is an specially designed thing in fire extinguisher people who douse fires, because शंकर के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि उसके पास एक लाइफ जैकेट है और उसने लाइफ जैकेट पहना दी. So, was it worth it? Let us hear louder for Mr. Manish Jain. Coming back, we've had a lot of discussions, lot of theories and multiple things that, yesterday and today. But this session is going to be something absolutely different. It's something which is practical. As you can see, the kind of objects that have been placed on the stage speaks for it. So we have someone coming here all the way from Ahmedabad, Gujarat, who's going to give us a very practical demonstration on something called the secret sauce for making education engaging and inspiring. Okay, so this practical demonstration is something which we'll be going to see for next half an hour. So I request everyone to please pay attention. Everyone, can I get a good afternoon? A louder good afternoon. Please have your eyes focus everything here on the stage so that you don't have group discussion separately, and we have one single discussion here on the stage. So please help me welcome Professor Manish Jain, Center for Creative Learning, IIT Gandhinagar, Gujarat. Can you please hear it for Professor Manish Jain, please? So anyway, thank you so much for calling me here. I especially want to thank Sudhir and Naveen ji for having me here, and my friend who's sitting right here, Vinay. And I didn't know about this thing when I think a few weeks back. एक बहुत बड़ा कुछ. By the way, कितने लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है? सवाल कैसे समझ आ गया? So it's sort of a trick question. I thought I'll start with that because what's going to happen is I'm going to speak and I'm going to maybe tell you a few stories, but I might start up speaking in Hindi, and it's not because whatever it is, but अगर आपको दिल की बात करनी है तो मातृभाषा में ही होती है, ऐसा मुझे लगता है. maybe you are very upset at your principals or whatever that अगर उनको आपको यहाँ पर भेज दिया यार, अब जाके किसी ज्ञान बांटेंगे, वो वहाँ पर बुढ़े लोगों को सुनना पड़ेगा. और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और गाली देनी है तो आप तेलुगु में देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इंग्लिश में मज़ा नहीं आएगा. So I'm not going to do that. I'm just saying, if you feel that I speak in Hindi, please raise your hand. I can converse in 2 languages, so I'll be happy to. So thank you so much for having me here. I was listening to some very interesting discussions that were happening. और मुझे लगा बहुत, I felt that we'll have to start talking about things that really make a sense and make a difference. My name is Manish Jain,
and I work in this small lab called Center for Creative Learning in IIT Gandhinagar. Long history. In fact, as I entered this hall, I reminded myself 2003 was the last or the time I visited this particular place. At that time I worked for Synopsys in the US. But anyway, so और कितने साल हो गए? 2000, almost 18 years. Place has changed. I think that I remember this place from that lobby. So I'm not going to tell you a lot of gyan or whatever, but I'll tell you 2 rules that that we'll have to follow for whatever we are trying to do. Right? We'll have just very 2 basic rules, and the first one of them is सभी लोग भाग लेंगे. भाग लेंगे. So I'm saying that while the doors are closed, no, everybody should participate, and then it doesn't matter what the right answer is or not. And you know, we're going to have, I'm going to tell you a few stories and see, convey something that I wanted to communicate. So we'll start with the first question. How many of you have eaten khichdi in your life? Khichdi. For those who don't know what khichdi is, let me define. It's not pongal, by the way. Pongal is the best thing invented by humankind, in my opinion. But boiled rice and boiled lentils, and there is no salt. That is the definition of khichdi. I wish you had invited me yesterday, then I could have said, यार अब जो लोग यहाँ पर आएंगे सबको 3 दिन तक नवीन जी क्या खिलाएंगे? खिचड़ी खिलाएंगे 3 दिन तक. So from tomorrow, given that we are all associated with education, let's start this experiment. We are going to eat only khichdi. So breakfast is khichdi, lunch is, dinner is, next day morning, and please see what the khichdi is: boiled rice, boiled dal, tur dal or whatever, and no salt. No salt. No, nothing on the side. आपने वो side में वो gunpowder or you know whatever podi, lots of nothing on the side. Only boiled. Next day breakfast, lunch, dinner khichdi. Third day breakfast khichdi, lunch khichdi, chai, no chai. चाय के साथ पकौड़े आ जाते हैं. No chai, khichdi. Now see what is going on with you. Try to feel what is going on with you. It is almost like 4th day, if you just see the khichdi, you don't have to eat. क्या होगा? Only देखने से ही जो कुछ अंदर है खाई नहीं है. क्यों हुआ? क्योंकि खिचड़ी है. Now think what we are doing in our schools and our colleges. We are doing khichdi of the curriculum, and we justify it. We say, oh, ये तो particular. This is curriculum khichdi. You have to eat. 19,200 hours of khichdi. 8 hours a day. 8 hours a day, right? 200 days in a year. 12 years in a row. You multiply that. 19,200 hours of khichdi. And बच्चे तो 12 साल में खिचड़ी खा के निकल जाते हैं. Thank God. हमारे और आपके जैसे टीचर मरते दम तक वही खिचड़ी खिलाते हैं. Till the time we die. And I think it's not funny. I think this is exactly what is ailing our classrooms. Or at least that's what I feel. I'm going to give you a lot of my opinions. So you have to take it as opinions, right? This is what I feel. And I'm just going to convey what I feel. This is what I thought. And this is what we are trying to do in this small lab called Center for Creative Learning, where the goal is to make... Now imagine this khichdi. इसके साथ अगर side में थोड़ा ढोकला, जलेबी, खाकरा. You see, I'm saying only all these Gujarati things. But you can do whatever else that you want. Suddenly this food becomes more interesting. अब खाने का मन करेगा. तो करिकुलम जरूरी है. Some people are saying रटना जरूरी नहीं है. रटना जरूरी है. बहुत सारी चीजें हमें रट जाती हैं. क्यों? क्योंकि मजा आने लग जाता है. If we start enjoying, रटना is not a chore. You know, it is something that I do all the time. कितनी चीजें, सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम रटे हुए होते हैं और कैसे हो जाते हैं, मजा आ रहा होता है. Or whatever, boyfriends, whatever, right? Because I'm enjoying all of that, right? Can we do the same thing to our learning and education? And I think we can. And that's the idea. That's the secret sauce. We have to make our education engaging and inspiring. And I'll tell you the benchmark. So I studied at IIT Kanpur, but that was way back. And you know, as an 18-year-old, 12वीं खत्म हुई और वहाँ पढ़ने का मौका मिला. At that time, it was considered one of the best places to go study. As an 18-year-old, the best thing about IIT Kanpur, and let me tell you, was there was no attendance. And I think it's a benchmark for all our schools and colleges. आप कल से attendance खत्म कर दो और देखो कितने बच्चे आते हैं. I think we can do that.
And that is what I'm going to sort of, maybe in whatever time that I have, give you a few examples. And I think that is what is ailing. You know, the reason, like I said, I was doing chip design in the US after my BTech from IIT Kanpur. Then I was studied a little bit at Stanford, and I was doing chip design. And then I decided to come back for various reasons, but something very interesting happened. And I want to give you an example of that and maybe do a test right here. Right? Something very interesting happened. You know, in 2012, there is this test called the PISA test that happened. I am telling you this story for a reason. Again, I think the whole idea is if I can communicate that, बाकी की चीज़ एकदम आसान है. फिर कुछ नहीं है, मैं आपको फटाफट 5 मिनट में इतने सारे खिलौने दिखा दूंगा. My job is over. 2009 PISA test happened. This is a test that happens every 3 years. How many of you have heard of PISA? Oh, wonderful. कुछ लोगों ने नहीं सुना, वो भी पढ़ सकते हैं. PISA मतलब वो PISA वो वाला PISA मतलब PISA, Program for International Assessment. Every 3 years this test happened. India decided to do this test in 2009. The results came in 2012. We were 73 out of 73 countries. नीचे से. We were doing only science, math and language. मैडम वो क्या है ना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 2 भागों में बांट लिया था, तो we sometimes we did 73 out of 74, largely, but whatever, not picking the details, but largely science, math and language. And the idea was we were doing very well. Lots of countries whose literacy was much lower than ours did much better because we were not focusing on why. In fact, आज अभी lunch के time discussion हो रहा था, lot of focus on how, not on why. I think that is what something that we'll have to focus on. So anyways, this PISA test happened, the result came out. That's when I decided to sort of, मुझे लगा कि इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए. हमारा सिर्फ परिभाषाओं के ऊपर जोर है, समझ के ऊपर जोर नहीं है. We are focusing too much on the definitions, but the why question is not being asked. So let me give you that example. So like I said, everybody has to participate. सभी लोग को इस activity में भाग लेना है. भाग लेना मतलब participate. All right. Everybody has 100 rupees. Everybody has to buy iron. Everybody has to buy iron. Okay. 100 rupees iron. There are 2 shops selling iron. 100 rupees a kg and 100 rupees a liter. सबको खरीदना है. 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर. ठीक है. कितने लोग 100 रुपए किलो खरीदेंगे? सबको भाग लेना भाई, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदना है. Everybody has to buy. आप मैडम नहीं, you have to buy either kg or liter. Please raise your hands. We all had food. Okay, largely everybody is buying kg. How many of you are buying in liter? You are buying in liter. Why are you buying in liter, sir? Density. Somebody else is saying it is molten. I can, by the way, do this experiment for long. It takes about 45 minutes to convey this. I'm not doing that. But largely most of us bought in the kg. कितने लोग यहाँ पर 5वीं पास हैं? So, we do this in grade 5. Grade 5. Volume is length time breadth time height. 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter block of iron is 1000 cc, 1 liter. You can feel that. I did not carry it in my box because then the airlines would have charged me extra. 8 किलो का वो 1 लीटर का डब्बा है. 8 किलो का, और हम लोग 1 किलो लेकर आ गए. 8 गुना लुट गए. Because density की परिभाषा रट ली. Weight by volume or mass by volume, and we'll fight whether weight or mass. But we did not really. So imagine you fill a bottle of iron with nails or iron filings or whatever, you can almost feel it's very heavy. Right? Why? Because that's the definition of density. And all of us, and if I were to ask you to buy oil, we will buy in liters because तेल है तो लीटर में खरीदेंगे, सॉलिड है तो किलो में खरीदेंगे. 5वीं में पढ़ा था, वॉल्यूम इज LBH, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ. I think this is why in PISA when we were asked, and the other sad thing, and I think with that data I'll show you a few things, 80% of our children were level 0 and level 1 competency, which means वो 19,200 घंटे की खिचड़ी से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा. It did not make a difference to the life by spending those, whatever hours in school. I think we'll have to start looking at education making more meaning to my life. It has to make a difference in my life. It has to be experiential. It has to be something that gives me wings to my desires. यार सोच पाने की क्षमता हो, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा. Process of from why, from how to why. And that is basically what PISA was trying to say. This is what we've been trying to do in this lab, like I said, Center for Creative Learning, जहाँ पर हमने ऐसे हजारों खिलौने बनाए हैं जिससे आपके मतलब टीचर्स और बच्चों की आंखों की खोई हुई
चमक वापस आ जाए. That's the goal of what we try to do. Bring back that gleam in the eyes of our children. I'll show you by an example. It was interestingly, when I was trying to set up this table, this is a toy we just designed. Anybody who's interested, I can show you. By the way, there is an award for 5,000 rupees for anybody who solves this. Cash award announced by Sudhir. Anybody who solves this puzzle, 5,000 rupee cash prize. So I was setting this table and the person who was helping me, I think a young student, उसको ये सब करने से कोई मतलब नहीं है. उसकी बॉस बोल रही है यार लगाओ, उसको इस खेलने से मतलब है. He's trying to, solve this problem. Anyways, so I have this, a straw in my hand. I made two pieces and I'll cut it. And two triangular cuts, all right? And press it a little bit and then blow. ये इसलिए भी है कि कुछ लोग सो जाते हैं ना. अक्सर वर्कशॉप में प्रेजेंटेशंस दिखाए जाते हैं तो सो जाते हैं, तो जगाने के लिए है. और यही काम मैंने दूसरी स्ट्रॉ के साथ करा. इसके साथ भी दो टुकड़े करते हैं. Two triangular cuts. And I'll put it in my mouth and blow. क्या होगा? This is longer. So in the evening, aksar when husband and wives are fighting, you know who this is. And you know who this is. This is because the length is longer. So the frequency is shorter. इसकी पिच कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, और इसकी पिच ज्यादा है क्योंकि लंबाई कम है. और λ/4 और तमाम चीजें क्लास में पढ़ाते हैं. इसके ऊपर हमने छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए हैं. अबाउट अ 10-minute video of why this works. We'll not do that, but this is very interesting. Now what I'll try to do is to convert the sound of the husband into और एक और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं. तो धीरे धीरे करके, and of course when you do this experiment on your own you have to be careful because sometimes like I was very involved, sometimes it will in the end, and then the sound will be very high pitch from somewhere else. But don't do that. We have had this incident, by the way. And then I can put these two together and put it in my mouth and then blow again. Now this is the sound of a train horn. Why? Because two frequencies which are very close by and are relatively prime, or whatever you want to define. We can do a lot of very interesting science, but I'm not doing that. I'm trying to see if I can engage you. If I can engage, people from 30 years all the way to 50 years, 60, whatever, then the children are right there. हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं यार उनको कुछ करने के लिए. हम सिर्फ पाठ्यक्रम की खिचड़ी खिला रहे हैं और वो भी कहते हैं सर खोलो, उसके अंदर उड़ेल दो और सर को बंद कर दो. सोच ही नहीं पाते हैं यार. I think it is something, and then I can talk about, why this thing works like a horn, right? Why does it sound like a horn? Because then, these two frequencies which are very close to each other, which means relatively prime, they will not interfere, and so there will be lots of notes that will be formed, and hence आपको ये सुनाई देगा. But पहले ये काम करना पड़ेगा. और बच्चे के रोने की आवाज भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. इसी में अगर मैंने दो छेद कर दिए तो बांसुरी है, बेसुरी है. You can figure that out. 2 holes, 3 noises for a 7. If you need 7 notes, you need to have 6 holes. How many ways can you put fingers on 2 holes? A lot of binary mathematics, by the way, invented by Pingala in 400 BC. Last episode, something that we did. I'm sort of glossing over, but the whole idea of this talk is to give you a possibility of what can happen if we start to do things with our own hands. If the goal is to make sure that the classrooms are joyous, experiential, full of hands-on activities, and then I focus on the curriculum. वहां से चालू नहीं करेंगे, वहां पर खत्म जरूर करेंगे. But I'll start with something that I have and that I can do. I'm going to show you, क्योंकि ये दिखा रहे थे तो ये भी दिखाता हूँ. It's also another thing which I often use. For those who are sleeping.
is a simple, this is something that you get in the market. ये टी वो जो प्लम्बिंग का लगता है, एक साधारण पाइप है, उसमें रबड़ लगा दी और ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी बांध दी, a polythene sheet. That's it. Now when you blow, the air tries to go out. It doesn't. It finds this thing vibrates. This is the air column. You increase the length. Smaller frequency, you decrease the length. आपका ये trombone बन गया 15 रुपए का है. A lot of times, all these and lots of very interesting science. सुबह C.V. Raman के बारे में बात कर रहे थे. He had 53 scientific papers written on the sound of musical instruments. First time I came to know about it. The only person, by the way, if you are a cello artist in Europe, और आपको समझना है कि भाई चेलो में होता कैसे है स्प्रिंग, आपको इंडिया आना पड़ेगा, कलकत्ता में. उसने वायलिन कैसे बजती है उसकी फिजिक्स को इन्वेंट करने के लिए एक अपनी मशीन बनाई थी. हमें वो समय अपने बच्चों को वो चीजों को देना पड़ेगा. ये स्ट्रॉ की जब वो काट काट कर मम्मी और पापा की आवाज बनाएंगे, हम अच्छे सवाल पूछ सकते हैं. हम कह सकते हैं, हाउ मच शुड आई कट so that sa becomes re? How much should I cut so that re becomes ga? And the answer is not linear. You know why? Because we teach this in grade 7. We call this indirect proportion. ऐसे बोलते हैं ना, direct, indirect. Speed 50% बढ़ गई, time कितने % कम होगा? 50% कम होगा? नहीं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, जितना बढ़ेगा परसेंटेज उतना बढ़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा. 50% बढ़ी तो 33% टाइम कम होगा. अगर स से रे काटने में 1 सेंटीमीटर गया तो रे से ग काटने में कुछ और होगा. एंड very very interesting things happen in the right context. Another episode we did on the mathematics of the sound, which is where we did. So hopefully that is the idea. We'll have to sort of relook at, just to give you a background, we did this program called, by the way, maybe you should all subscribe to our channel also. It's called CCL IIT Gandhinagar, CCL IIT. You can just Google search CCL/3030. So we did this program before pandemic called 3030 STEM. The reason we called it 3030 was because we had exactly 30 subscribers when we started. 3030 subscribers थे. और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था, क्या? पाठ्यक्रम में जिंदगी का तड़का. We want to spice up the curriculum. We have seen that the classes are, dry, drab. उसमें कुछ interesting चीज कर सकते हैं क्या? That is where we came up with this, and we did this series twice. We have now 2.5 lakh subscribers. We want to make sure आप लोग भी जुड़ जाएं. वो घंटी जो भी दबाते हैं दबाइए. 2 crore people have watched that program because we are doing all of these things by things that are all around us. आसपास की चीजों के अंदर से ढूंढकर गणित और विज्ञान की चर्चा करेंगे, तब हमको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी. छोटा सा उदाहरण देता हूं. आज सुबह ही चर्चा हो रही थी. How many of you know how to add 2 numbers? Everybody, I'm assuming. Okay. When we add 2 numbers, we add from units, then tens, then hundreds and thousands. All right. But if I give you notes, I say 100 rupee note, 10 rupee note, 1 rupee note. Which one will you add? पहले तो 100 करेंगे. So why do we do things in classes and do something completely different in our lives? Which one makes more sense? If I were to write a computer program to do addition of 2 numbers, which way should I do it? Why should I do it from here to here? I take this example further. If I have to subtract 2 numbers, again I'll do. But if I have to multiply 2 numbers, same thing. But if I have to divide 2 numbers, अब आप उल्टा जाते हो. क्यों जाते हो? Why do we go division the other way? And 3 things we go this way. What is so magical about it? Why should it work? Why should it not work? And in fact, that is my challenge or whatever. I think our students should be able to, write a program or algorithm or whatever कि इधर से divide करो या इधर से. भगवान जी ने नहीं लिख के भेजा कि यहाँ से करना है. हमारा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर है. ऊपर से नहीं जाता तो ऊपर चढ़ा दो. ऐसे कहते हैं, 0 ऊपर चढ़ा दो. I don't know what you say in English, but 4 by 3, 4 doesn't go with 3, so add a 0. Bring it down. Tell me which programming language, which white hat junior will tell you how to bring it down. It doesn't exist. There is nothing like bring it down or take it up. In mathematics, there is plus, minus, multiply and divide. You have to use that to write the algorithm of division. I think we are not focused on the algorithm. We are only focused on karna kya hai. Kyun? And that is where, in my opinion, the beauty of education is lost. I'm also part of this committee which is writing textbooks.
of NCERT. I'm part of that NCERT के वो math syllabus committee में. So we were thinking about, and we had this question, should we teach quadratic equations to our students in class 10? How many of you think we should? Okay, how many of you have used quadratic equation in your lives? एक जने को छोड़कर, I bet जिंदगी में quadratic equation नहीं आई काम में, नहीं आएगी, 99.9999 नहीं आएगी. तो फिर क्यों पढ़ाना चाहिए यार? हटाओ, सिलेबस बढ़ जाता है, किताबें बढ़ जाती हैं, दिस दैट वॉट एवर, राइट? हटा देना चाहिए, जिंदगी में काम नहीं आएगी. व्हाई शुड वी टीच? देयर इज दिस बिग थिंग दैट if it is useful in our classes, if it is used in our life, we should do it, otherwise. So a lot of people were saying, but then I said, I'll give you another example. Imagine everybody has a bat and a ball. And everybody is asked to, bat को लिया और ball को मारा और जोर से मार दिया. और एक धोनी है और एक विराट कोहली है और एक आप है और एक आप है और एक आप है, सभी के हाथ में बॉल है. अब धोनी मारेगा तो बहुत दूर जाएगी, विराट मारेगा बहुत, मैं मारूंगा तो 90 पे मारोगे तो गड़बड़ है, सीधे सर पे आएगी. बट माई कंटेंशन और चैलेंज टू यू इज, यू हिट एट एनी एंगल एंड हुएवर हिट्स, कितनी भी जोर से मारे, कितनी भी धीरे मारे, कितने भी एंगल पे मारो, बॉल पहले सेकंड में 5 मीटर ही गिरेगी, गारंटी. दूसरे सेकंड में 15 गिरेगी, तीसरे में 25 गिरेगी. इंग्लिश, इन द फर्स्ट सेकंड द बॉल विल फॉल 5 meters, in the second 15, in the third second 25, in the fourth second 35, and so on and so forth. Guarantee. Why? This is the definition of quadratic equation. If we are going to teach quadratic equation as minus b plus minus root square of b square minus 4ac upon 2a, I think we should not. But if we teach it how Dhoni will hit a ball or I hit, and it doesn't matter, the distance falls is always incremented by 10 meters, then it suddenly becomes interesting. Now I am interested in your mathematics, not because I'll use it in my life. जब हम कोई बढ़िया पिक्चर देखते हैं, कोई बढ़िया मूवी देखते हैं, रिवर फ्रंट पे जाके मजा करते हैं, या यहाँ पर जो भी आपकी लेक है वहां जाकर आप मजा करते हो, तब पूछते हो कि जिंदगी में काम आएगा कि नहीं? तब तो नहीं पूछते यार, मजा आ रहा है. Why can't education be enjoyable? That I think is something that we are missing. मैं ये नहीं कह रहा कल से बस enjoyable नहीं, बट उसका भाई कुछ तो एलिमेंट डालो. अभी तो उसको गला नहीं छोड़ के बाहर कर दिया, मार दिया. So that is my contention. I think we'll have to fundamentally look at how, one, content, and two, how. And by doing this program, we realized when we had 2 crore people watch this in Hindi, we realized these 3 things. And I'm going to give you that example of what can be a good, in my opinion, something that can engage. Like, we have to start to tell stories, which we probably don't in our schools and classes. हमें लगता है टाइम ही नहीं है. भैया कहानी सुनाओगे तो इतना मन लग जाएगा कि बाकी करिकुलम बच्चे अपने आप घर पे कर लेंगे. आप सुना के तो देखो, हम भूल जाते हैं. So 3 things I thought. After doing this, I realized we as a team, we are a lab of 25 people, completely sponsored by us. We would like to work with the state here. Had very interesting discussions with Sinha ji. आपके साथ जो चर्चाएं हुई, कुछ करेंगे. But मुझे 3 चीजें समझ में आई. पहला, धमाल. 3 चीजें जो हमारी कक्षाओं में, 3 things which are extremely important in our classes, in the content that we try to deliver, whether it is high school or senior secondary or whatever it is. 1, धमाल. पिक्चर देखिए सबने, धमाल. मजा आया कि नहीं? मजा. So one axis is मजा आया, धमाल. Second axis, the content that I am trying to, आपको क्वाड्रेटिक पढ़ानी है तो a square minus plus bx minus c whatever plus c करना पड़ेगा. The content, वो तारे जमीन पर content. That is the second axis. धमाल हुआ, तारे जमीन पर हुआ, लेकिन सबसे जरूरी और उतना ही जरूरी इज 3 Idiots. कोई ना कोई बात दिल को छू गई. Somewhere the content touched the heart. I will remember it for my life. That I think is extremely important. Now I'm not going to tell you how much of Dhamal you do, how much of 3 Idiots do, how much of whatever you decide, because you know your audience the best. But ये डालना जरूरी है. We cannot escape it. Our classes have to be engaging by all these 3 things, and we'll have to do that. And so, this is how I am sort of putting it. Maybe there are other ways of how you do it, but that is basically, I thought I'll just convey it very quickly, given the time thing that I have on my head. ठीक है, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीजें दिखा देता हूँ. I sort of need a clock thing there, and I need a newspaper in the end when I
finish. You have to let me know when you want me to finish 5 minutes before so that I wind up. मैं आपको ये 2 चीजें दिखाता हूं. ये मेरा पानी की बोतल कहाँ गई? हाँ, 1 मिनट आएगा, कोई आएगा इधर? आप आएंगे? मैं नीचे आ जाता हूँ. इतने एक कोई पानी का ग्लास भर ले. होपफुली नहीं निकलेगी, बट आपको मैंने बड़ी सिरिंज दी है और मेरे पास छोटी है. नहीं, आपको ये लेनी पड़ेगी. आप बड़े हैं तो आपको बड़ी सिरिंज देंगे, हम छोटे हैं तो वो छोटी सिरिंज देंगे. ठीक है? तो मैंने इनको बड़ी सिरिंज दी है, मेरे पास छोटी है. अब देखते हैं कौन जीतता है. ठीक है? दबाइए, दबाइए. आप दोनों हाथ यूज कर लीजिए. आप कुलीग्स को बुला लीजिए. आप कुछ नहीं कर सकते, मैं एक उंगली से आपको हरा दूंगा. You see what is going on? And then what we did, Naveen ji, was, of course, आप बोलिए मत अभी, but we added more syringes here. कि भाई आपसे एक से नहीं हो रहा तो 3 लोग लो लो, 3 सिरिंज लगा दी मोटी मोटी, आप लगा लो दम. और मैं अकेला. You know what is going on? This is the definition of a machine. And it is so sad that a lot of times in the competitions we see these jack, वो hydraulic jack वाले आ जाते हैं ना, वो बच्चे ऐसे सिरिंज दबाते हैं. The input and the output is exactly same size. It is not even a machine. The difference between the area of this syringe and this syringe, that is a machine. ये छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए ये हार गए. 16 गुना ज्यादा, और 2 to the power of 2, this is 25 times the volume, right? 25 times the volume. So 25 to the power of 2 by 3, and you can figure out why. That is the amount of force. That is the times of force he has to apply for, because that is Pascal's law, grade 8. Force by area is pressure, which is same. पर आप ये कराओगे क्लास में ना, तब वो हमेशा याद रहेगी और मजा भी आ जाएगा. पहले खेल. First we do the game. This is a different way of thinking about pedagogy, in my opinion, and has to happen at every level, not just. कोई बोले अच्छा प्रॉब्लम भारत में है, हायर एजुकेशन से पूछो तो वो बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम ना हाई स्कूल वालों की है. हाई स्कूल वाले से पूछो सर ये मिडिल स्कूल वालों की है. मिडिल वाले से पूछो सर ये प्रॉब्लम प्राइमरी वालों की है. प्राइमरी वालों से सर ये पेरेंट्स की है, पैदा ही क्यों कर दिया. अरे यार जहां आंख खुली वहीं सवेरा, ऐसे बोलते हैं ना. वी शुड स्टार्ट वेरेवर वी गेट द अपॉर्चुनिटी. लेट्स जस्ट फोकस ऑन मेकिंग आवर क्लासेस इंटरेस्टिंग. दैट्स ऑल देयर इज टू इट. करिकुलम अपने आप हो जाएगा. लेट्स कीप इट ऑन द साइड. टू मच प्रेशर, एज अ रिजल्ट वी आर नॉट एंजॉइंग. अगर एंजॉय करेंगे तो अपने आप बच्चे पढ़ लेते हैं. उनको कोई सिखाता है पबजी कैसे खेलना है. मेरे पास एक बहुत सुंदर खिलौना था, और इसके लिए मुझे फिर से नीचे आना पड़ेगा. 2 चीजें मैं बहुत बढ़िया आपको दिखाऊंगा, और इसके लिए आपको तेलंगाना सरकार से 1 पैसा मांगने की जरूरत नहीं है. आई गारंटी यू. सी समटाइम्स आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर, मतलब वो मानसिक गुलामी वाला खेल भी है. इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर अ पुअर और रिच कंट्री, बट सो आई हैव दिस piece of rubber and 2 straws, and I'll put this in my, just a bucket of water, and I'll blow. बढ़िया. अब मैं इसको उल्टा करता हूं. So I do this, and I do this, and then what I do is put it like this, and then I will spin. When I spin, it is like a sprinkler. ये छोटा सा खिलौना 1 पैसे का 3 तरीके से काम करता है. एक तरफ से सीटी, एक तरफ से फुवारा, तीसरी तरफ से स्प्रिंकलर. दोनों स्ट्रॉ बराबर हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज इट बिहेव डिफरेंटली. आई कैन यूज द सेम टॉय इन grade 3 एंड से व्हाई डोंट एवरीबडी मेक दिस एंड लेट्स गो आउट एंड प्ले. एंड देन ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क. अगर दोनों बराबर रखोगे तो दोनों तरफ से या तो सीटी बजेगी या दोनों तरफ से फुवारा बजेगा. दोनों तरफ से नहीं बजेगा. आप बनाओगे तो देखोगे. दिस इज व्हाट वी विल डू विद आवर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हु कम टू IIT गांधीनगर एंड विजिट आवर कैंपस, व्हिच इज व्हाट आई वाज सजेस्टिंग टू यू, दैट पीपल कम एंड स्पेंड 10 days. हमारे यहाँ 22 दिन तक टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स, फॉर 22 days. बिकॉज इफ वी हैव बीन ट्रेन्ड, और आई हैड वर्कड विद अरविंद गुप्ता. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ हिम. आई हैव वर्कड विद हिम फॉर अबाउट 3 years before I
moved to Gandhinagar, and he used to say, Manish, training is for horses and mules. Human beings can only be inspired. So if you feel bad by what I'm saying, these are his words. I strongly believe that. आप कभी समय तो बिताओ यार साथ में 12 दिन 10 दिन. It will take that much time to think about things differently. हमको क्या होता है यार, प्रोजेक्ट कर लो, कल इम्पैक्ट दिखा दो, परसों पायलट करेंगे. फिर यार 75 साल से चल रहा है, आपको समय देना पड़ेगा. रोज पौधे को हर रोज निकाल के देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो मर जाएगा. You try that in your house, take up, plant, and then, oh, not increase, put more water, not increase, put more water, not increase, dead. Let's give it some time, let's give it some खाद or whatever, and hopefully, एक और सुंदर खिलौना था, मैं आपको दिखाता हूँ. This is something I felt, which is why I thought I should do this. I had realized कहानियों का क्या रोल है, but इसको मैं यहाँ पर भर देता हूँ. यहाँ पर पानी, दोनों काम हो जाएंगे. सुंदर खिलौना है, शायद भर गया. और ये चिड़िया का पेट भरा है इसलिए बोलती है. अगर इसको मैं खाली कर दूंगा, इसके अंदर पानी निकाल के, अब नहीं बजेगी. हमने अगर किसी को दिया, बाय द वे द साइंस ऑफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. द इनकाज यूज्ड टू मेक वेरी इंटरेस्टिंग विंड इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग. हर तरीके की चिड़िया की साउंड निकल जाएगी, बट आपको क्रिएटिवली उसको बनाना पड़ेगा. ये पुराने जमाने में बनती थी, मट्टी की चिड़िया एक ही तरह की बनती थी. हमारे बच्चे अब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, वो इसके अंदर 3 छेद हैं, अच्छा नीचे पानी भरा हुआ है, एंड देयर आर वॉर्टिसेस दैट गेट क्रिएटेड. देयर इज दिस होल एपिसोड ऑन 3030 वी डिड ऑन साउंड, वेयर वी एक्सप्लेन्ड व्हाई दिस थिंग वर्क्स, एंड द साइंस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. मैं ये कह रहा था, इन्हीं खिलौनों को, जो मेरे पास ये जो खिलौना है, आई कैन डू इट इन ग्रेड 3, आई कैन डू इट इन ग्रेड 14. 14 मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर, विच इज व्हाट वी डू इन IIT गांधीनगर. विल से at what angle will the water go out the farthest. Interesting thing is, the textbook says 45 degrees, and we have proved that. Sine square of 2 theta whatever is 0, so sine 2 theta is 90, so whatever is 45. Neeraj Chopra, when he won the gold, threw the javelin at 36 degrees. 36 degrees. A Bofors gun or similar howitzers, when they fire at 55. And the textbook, 45. The sad thing, and this was our first episode by the way, which was the most watched episode, where we said, Neeraj Chopra ka bhala. Why did Neeraj Chopra threw at 36 degrees? He was not an idiot. He knew exactly what to do. He knew 36 पर फेंकने से सबसे दूर जाता है, पर किताब कहती है 45. And the point is not whether the किताब is right or Neeraj. The point is that when we read these news, am I able to reason and think कि यार ये तो गड़बड़ है यार, किताब में कुछ है, ये कुछ है, कुछ तो चल रहा है. That is the way of looking at newspaper or stories that we want to bring in our schools and classrooms. And this can be done at whatever level. इसमें 45 डिग्री पर सबसे दूर नहीं जाएगा. And in fact, when you spin, it seems like ऐसे गोल गोल जा रहा है. पानी स्प्रिंकलर के जैसे लगता है ना, गोल गोल जा रहा है. तो कुछ लोग से, हाँ गोल गोल है, तो क्योंकि आप गोल घुमा रहे हो तो गोल जाएगा. आपको लगता है अगर गोल जाएगा तो इसकी छत पे चढ़ जाओ, गोल गोल घूमो और यहाँ उतर जाओ, क्या होगा? योर लास्ट एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स. When you out in the air, you will not come back. You go down because this force of gravity will only pull you down. Those drops of water which look like a sprinkler, they are different drops. Each single drop is going only in a straight line. लगता है ऐसे. Now suddenly interesting things are happening. अब हमें ये सब करने में मजा आ रहा है. अब हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया. अब हम बहुत सारे करिकुलम की चीजों को, इसको छोटा, इसके लिए क्या आपको स्टेट से पैसा मांगना पड़ेगा यार? Many toys, all of these, a lot of these toys. Of course, that doesn't mean we don't have to equip our classrooms. In fact, we have ये डब्बा, मुझसे कोई पूछ रहा था, आज मैं सुबह विनय के घर गया तो बोला तुम्हारी अटैची बहुत बड़ी है. That is my अटैची. The only thing in that अटैची is this डब्बा. That's it. I carry one, I just wear this piece of cloth. और रात को धो दिए, सुबह पहन लिए. Same thing yesterday, same thing today. This is the only thing. 3.5 kgs the airlines allow you. Imagine this is the box that is there with every single teacher in our classrooms. खोजी डब्बा. कीमत नहीं है, लेकिन सोच चाहिए होगी. और अगर ये डब्बा सबके पास है तो अगले दिन देखिए क्लास में क्या माहौल होता है.
और स्कूल में. I think it is all our imagination. I think that is what we'll have to do. And there is Mr. हमारे DC NVS के बैठे हुए हैं पीछे. Thank you so much for coming, sir. We are doing this program with NVS. And every Sunday program that we do, NVS के हर क्लास में हर बच्चा बैठ के देखता है टीवी पर. और वो 200 बच्चे बैठ जाते हैं और पूरा प्रोग्राम देते हैं. He can tell you about this thing that we are doing with NVS. Their teachers have come 22 days and spent with us 10 days. So when they come, sir, they'll carry a big water bottle. Right? बहुत बड़ी पानी. In fact, this is the most important thing that I'm going to tell you. It can save your lives from boring workshops. Always carry a large water bottle. This is what this teacher was doing. उनको JNV से नोटिस आ गया, मैडम आपको IIT गांधीनगर में कुछ बुढ़े लोग आपको पढ़ाएंगे, आपको 10 दिन के लिए जाना है. Some teachers are very happy. परिवार से छुट्टी मिली. See, you can see all the smiles on the faces. Some people, of course, are saying Gujarat very hot. कौन जाएगा गर्मियों में? But I had this teacher. First time she was coming to Gujarat. Big water bottle. I said, मैडम इतनी बड़ी क्यों लाए? छोटी पानी की बोतल भी तो है. नहीं सर, नहीं सर. I said, no, tell me. I said, sir, okay, I bring this because these workshops, no, it gives me 2 reasons to walk out of the room and the speaker doesn't feel bad. I said, okay, what? Sir, अब पानी की बोतल है तो पानी भरने जाना पड़ेगा. Okay. और इतना पानी पिएंगे तो बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा. 2 कारण हैं. आप बढ़िया पानी की बोतल साथ में रखो, आप बच जाओगे, जिंदगी बन जाएगी आपकी. This is what our impression is about teacher workshops. Can we change that? I think we can. This is what we are trying to do with JNV or with KVS or whatever. So I would like to invite all of you to come see our lab, small lab, 3 rooms in IIT Gandhi. Whenever you are that side of the country, please do come and visit. 24/7 हमेशा खुली रहती है. Every Sunday, last 6 हफ्ते से, like I was saying, मैं नहीं सोया because this is a charkha and it comes out alive from this sheet. I mean, all of these toys have been designed in our lab. When I spin it, if you focus here, ये बत्ती बनाता है. It is now spinning electricity. Why? Because there is a cycle spoke. When I spin it, it has 2 magnets inside. There is a coil, and you spin, it produces electricity. You can ask various questions. This is DC, current is AC, why does it light? चाहे ऐसे घुमाओ तो भी जलता है, ऐसे घुमाओ तो भी जलता है, क्यों होता है? All of these questions can follow. But first you have to make it. And how you make it? All these pieces are designed in our lab. Nowhere else will it be, कहीं और है नहीं दुनिया में. और इनको जोड़ने के लिए रबर बैंड लगती है. ये pieces लेगो की तरह बाहर आ जाएंगे. Somebody was saying Lego. You were saying Lego. All these pieces come out of Lego. My son used to do a lot of Lego. Interestingly, he didn't go to school. After grade 7, he decided to not go to school. घर पे ही रहा. He's studying his medicine at AIMS. But उसको Lego से बहुत प्रेम था. In fact, मुझे बता भी देना चाहिए. This toy is something that he had designed. I call it beautiful, right? I mean, of course, he designed one, but 3-in-1 छोटा सा खिलौना है. और ये by the way, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो मैं बता देता हूँ चलता क्यों है. नहीं तो या नहीं बताना चाहिए, या बता देना चाहिए. ये ऊपर की स्ट्रॉ बिल्कुल स्ट्रेट है. अगर आप फोकस करके दिखाएंगे ना तो शायद कैमरे में दिख जाएगा. लेकिन नीचे वाली का रास्ता आधा रुका हुआ है. This straw is blocked by the bottom straw halfway, so that when I blow, the area is less to go out, so the speed increases, pressure decreases, water comes up. When I blow from here, nothing like that, this starts to vibrate, sound is produced. So this works like Lego. Only pieces, and just these pieces which are laser cut, we design laser cut, and then give it to some vendor. He will give these sheets. You get this sheet. Takes about half an hour. You make your own charkha generator. This is a gift I thought I'll give to. आप बाद में देंगे, हम आपको पहले मोमेंटो दे देते हैं. This is a gift from IIT Gandhinagar. Please visit. And I'll just come to the end. एक मुझे अखबार का कागज दे दीजिए. I will just end with a story. जब तक आप देते हैं तब तक मैं दिखा देता हूँ. टेबल पर 4 बच्चे बैठे हैं. हाँ, बिल 32 से जलेगी. Now, rhetorical, right? हमारे क्लास की हर बच्ची जब ये जनरेटर अपने हाथ से बनाकर बत्ती जलाएगी तो दिमाग और देश की बत्ती जलेगी यार. जलनी भी जरूरी है, पर वो करना पड़ेगा. वो क्लास में चालू करना पड़ेगा, कॉलेज में चालू करना पड़ेगा. एक टेबल पर 3 बच्चे बैठे हैं, अचानक एक चौथा आ गया, वही टेबल रही, लेकिन अब 4 बच्चे बैठ सकते हैं. एक बच्चा वापस चला गया तो अब ये वापस से.
Where should I cut these? What should these pieces be? So that what should the size be? ये 10 by 10 का है. Now the interesting thing is इसका कोई curriculum नहीं है. ये आप 5 में भी पढ़ा सकते हो, 10 में भी पढ़ा सकते हो. जिसने BSc करी है उसके लिए भी ठीक है, जिसने नहीं करी उसके लिए भी ठीक है. Why can our curriculum be more inclusive in that sense? लिखा पेन से, खड़ा कर दिया. Now this pen is standing in the air. ये हर टीचर के टेबल पे हो सकता है. आपने साइन करा, अधिकारी लोग आप सर साइन करते हैं ना, वो साइन करा और यहाँ पे हवा में खड़ा हो गया पेन. कुछ है नहीं, एक चुंबक है, दूसरी चुंबक है. बहुत ज़्यादा पास रखेंगे तो चिपक जाएगा, एम्पल डिस्टेंस रखेंगे तो खड़ा रहेगा. एंड सिंस द टाइम इज लेस, दिस इज, वी आर इन द हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली इन इंडिया, और वेल मे बी Bangalore wants to call it and Hyderabad wants to call it. I don't know who will win, but whatever, whoever it is, I'm not going to get into that. But एक बहुत सुंदर खिलौना बनाया है. And all of these toys, by the way, are available, are all completely designed by us in our lab. And interestingly, none of them are patented. We have not, probably thinking we don't know whether we will, they are registered, but you know, we want all of these to be used. ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों के हाथों में तो जाएं. ये बहुत सुंदर, और कहीं नहीं मिले आपको. मेरे पास 26 पत्ते हैं, 26 cards, A to Z. They have holes in them, right? And if I have to ask you to sort them, you know what sort is, right? पहले A ढूंढ के लगाना, तो पहले A ढूंढेंगे, A मिल गया. मान लो A लास्ट में होता तो कितनी बार ढूंढना पड़ता? 25 times I have to skip. So you should not answer. And then let's say, what's the worst case? फिर B लगाओगे तो कितनी बार ढूंढना पड़ेगा? 24, because that guy can be the last. So total कितनी बार करना पड़ेगा? 25 plus 24, blah blah blah, all the way till 1. तो कितनी बार टोटल हुआ? अब लिखेंगे 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. In grade 3 this story happened. Somebody was asking कि Nobel Prize क्यों नहीं मिलते? ऐसे कहा था ना किसी ने, कोई अभी चर्चा चल रही थी. I was hearing that story. How many Indian people have got Nobel Prize in mathematics? Now you'll say, oh, mathematics में तो मिलता ही नहीं है. There is a prize called the Fields Medal, which is equivalent to Nobel. 0. How many women have got? 1, except for this last year, the second woman got. And this woman, Maryam Mirzakhani, who was American, he was Iranian, went to Stanford, studied, became an American. She won the Nobel Prize by she was not interested in mathematics. Her brother in Iran told her this story. कि एक टीचर आए क्लास में और 1 से 25 तक नंबर लिख दिए और बोला जोड़ के बताओ, तो बच्चे लिखने 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10 plus 5 15, और आगे जाएंगे तो बहुत धीरे हो जाएगा. एक बच्चा बैठ के कोने में कुछ नहीं कर रहा था, फोन पे कुछ कर रहा था. तो टीचर ने बोला क्या कर रहे हो, बताओ आंसर. तो बच्चा खड़ा होकर बोलता है 5050, 1 till 100. टीचर इज शॉक्ड. Why are you not adding? No, I am looking at the patterns. 1 and 100, 101. 2 and 19, 101. 3 and 98, 101. 4 and 97, 101. How many pairs? 100 numbers, 50 pairs. 50 times 101 is 100 times 50, and 1 times 50, which is 5,000 plus 50, 5,050. Teacher says, get out of the class. Because I have no more to offer you. This child was Gauss. He was the one who did absolutely amazing things in, basic mathematics and physics. This same story inspired Maryam to pursue mathematics, and she won. We will have to tell our children inspiring stories and give them interesting curriculum. Only then there is a chance that we win. And absolutely, बहुत हमारे देश में बहुत भूख है. भूख समझते हैं? There is a lot of hunger. Unfortunately, we are not able to whet the appetites. And it doesn't cost a lot. It does cost money, but money is not the only issue, in my opinion, of course. Like I said, all these are my opinions. I have an opinion just like you all. So I have these numbers, and what I'll do is I'll put a stick. These are all shuffled, and pull some cards out, and idhar 5 holes. Put it in the next one. Put them out. Bring it here. Put in the 3rd hole. And bring it here. 4th hole. Okay. And the last one. See, abhi bhi kuch hua nahi hai. And the last one. And suddenly something has happened. And suddenly something has happened, and you can see it here.
By the way, if you go and come and study at IIT Gandhinagar, this is how I will teach you programming. Or radix sort. This is radix sort. Why does it work? इधर से डंडी डाली, इधर से डालेंगे तो वो बोलेगा उल्टा हो जाएगा. 5 में हो रहा है, 3 में भी होगा. I will leave that as an exercise, I will not show it, but I can sort it by 3 also. This is binary mathematics invented in India in 2100 BC before Leibniz. Pingala's Chand Shastra. Because they were pursuing poetry. They were saying Laghu and Dha and Dhin. How many rags can you make with Dha and Dhin? 0 and 1. They did, something called Pascal triangle. कितने लोगों ने सुना है Pascal triangle? काफी सारे लोगों ने. It is actually Meru Prastara. Exactly. Wikipedia says it. Go to Wikipedia today, check Pascal's triangle. Pingala's Meru Prastara, 400 BC. We are still calling it Pascal. And beautiful. By the way, this is where Pascal's triangle, this is binary mathematics. इसके अंदर Pascal triangle बैठा है. But हमने कहा binary में क्यों करें? Ternary में कर देते हैं, 3 छेद में कर देंगे. But इसमें 3 तरीके के छेद हैं. 0, 1 and 2. I'm not going to tell you, but it works with 3 holes and it's a challenge for you. आप 2 से बना के दिखाओ और चलाओ. This is how we should teach programming in my opinion. Whitehead Junior will not do it. That's what I think. I don't know. Basic algorithm, very basic. आज सुबह किसी से बात हो रही थी. For those who know how to do square root, वो 2-2 के पेयर बनाते थे, डबल कर देते हैं. चलता क्यों है भाई? Why does it work? ठीक है जी, खत्म. I just need a newspaper and I'll finish. That's it. I have lots of toys by the way. And I could have gone on and on and on. ये मोटर में 2 LED लगा दी. ये पेन हमने लिटाया था, ये पेन खड़ा हो गया. खड़ा मतलब अब ये हवा में लेट गया. पहले ऐसे था, अब ये ऐसे है. This is spinning in the air. Just 3 magnets. 50 paisa, 1 rupee magnet each, a pen, and this will spin in the air. This is a fidget spinner. And on a CD, if I keep it like this, it falls. But if I spin it and keep it here, it will not. If I keep it like this, it will spin the other way. If I keep it like this, spins the other way. If I spin it like this, it turns. But अगर मैं घुमाऊंगा और करेंगे, नहीं होगा. This is why your helicopters fly and don't crash. वो पीछे दिखते हैं ना, वो रोटर, टेल रोटर. ऐसे ताली मत बजाओ. इसको बनाकर खेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा टेल रोटर के कारण हमारा वो उल्टा क्यों नहीं भागता. ठीक है जी. आप सभी के पास न्यूज़पेपर पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे, रहने दीजिए टेबल पर. चाहे तो साथ में बना सकते हैं. बट दिस इज द, आई कुड गो ऑन एंड ऑन. आई हैव लॉट्स ऑफ टॉयज बट आई विल जस्ट शो बट नॉट गो इन डिटेल्स. दिस इज अ कार दैट ड्रॉज अ साइन वेव. आप इस कार को चलाओगे तो कार सीधे चलेगी, पेन ऐसे चलेगा, लेकिन वो वेव बना देगा. ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं जिसमें मैं अभी रहने देता हूँ एक्चुअली. या ओके, in the end I will ये story बताइए. This is my favorite thing and when I felt कि यार हमारे साथ धोखा हो गया. आर्किमिडीज का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है. क्यों सुना है? यूरेका, whatever, right? If you ask Archimedes if he were alive today, what is your most important discovery that you have given to mankind? He will not say Eureka. He was the first person to have discovered the volume of a sphere. And actually while he was doing it, his head was chopped off. And while a Roman soldier was trying to cut his head, he was drawing on the floor and he said, "Don't disturb my circles." आज उसके tombstone पर आज भी एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक स्फीयर है. 4x3 fire cube. He did it before calculus was invented, 1600 years before. His proof is absolutely elegant. Only Pythagoras theorem and laws of lever. Give me a rod long enough, I can lift the earth. हम अभी भी उसमें अटके हुए हैं. इसमें पानी भरिएगा तो जितना पानी इसमें आता है, इसमें exactly उतना आएगा. This is 1, this is 1/3, minus that is 2/3, that's why this is 2/3. कितने लोगों को तैरना नहीं आता? लास्ट स्टोरी, आई एम डन, दैट्स इट. क्या यहाँ पर कितने लोगों को तैरना नहीं आता है? तैरना नहीं आता है. विनय, व्हाई डोंट यू कम? Vinay and I were in college together 4 years and it's been a pleasure. Thank you Vinay for ऊपर आ जाएं.
So Vinay doesn't know how to swim, बट समुद्र में यात्रा करने का शौक है. हिंदी में ही सुना देता हूँ, चलेगा? दौड़ेगा, क्योंकि वो फ्लो ना वो अंग्रेजी में निकलेगा नहीं यार, थोड़ा सा. विनय को तैरना नहीं आता, लेकिन समुद्र यात्रा करने का शौक है. समुद्र यात्रा करने के लिए उसको एक शिप चाहिए, और शिप को चलाने के लिए कैप्टन चाहिए, और कैप्टन का नाम है टोपी शंकर. एंड सो ही सेज 4 दिन की यात्रा है, और आपको हम 4 दिन में आपके घर छोड़ देंगे, बट एक शर्त है कि रोज आपको टोपी पहनाएंगे. खाना पीना और ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री. विनय इज वेरी हैप्पी, ड्रिंक्स फ्री हैं. तो पहले दिन डेक पर आए, टोपी शंकर ने कागज में 3 फोल्ड लगाए, और ये बन गई पहली टोपी, और इसको बोलते हैं खुमरी. खुमरी. छत्तीसगढ़ और wherever they do rice planting, paddy planting, they wear this kind of a cap, of course made out of wood, straw and bamboo, so that it keeps you protected. Very good, he is very happy. Of course शाम को अपने घर में जाकर, कमरे में जाकर सो गए. खाना पीना ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री था. He was very happy. Came the next day evening, टोपी शंकर made 2 more folds and then made 1 half fold, and this became the second cap. It's called the fireman's cap. अग्निशमन कर्मचारी की टोपी. फायर पर्सन's cap. All right, and you will see that there is ऐसे हो जाओ, there is something that is jutting out, right? That is an specially designed thing in fire extinguisher people who douse fires, because spinal cord runs very close here, और अगर वहाँ कुछ भी गिरा, you are paralyzed. So protect this part of the neck. There is a protection on the. So Vinay is very happy. He is now a fire extinguisher. Comes back the next day, 3rd day, टोपी शंकर makes 1 more fold, और ये बन गई तीसरी टोपी. इसको कहते हैं शंभू शिकारी की टोपी, एडवेंचरर्स कैप. टिंकल नामक मासिक पत्रिका में ये टोपी आती थी. अब थोड़ा सा बोर हो रहा है. 3 दिन हो गए, समुद्र की यात्रा, पानी ही पानी, देखने को कुछ नहीं है. तो बोला घर छोड़ दो. टोपी शंकर ने बोला नो प्रॉब्लम, लास्ट डे लास्ट कैप, दिस इज पांडु कैप. पांडु हवलदार की टोपी. बॉम्बे में जितने भी हवलदार हैं यही वाली टोपी पहनते हैं. तो उसने बोला ये टोपी पहना दी, और अब उसने कहा आपको घर ले जाना है, तो हम आपको घर इस नाव में बिठाकर घर में ले जाकर छोड़ दें. और जैसे ही जा रहे थे, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. नाव में क्या ट्विस्ट आएगा? जोर की बारिश, तूफान, और लहरें इतनी ऊंची ऊंची ऊपर नीचे जा रही हैं, और तैरना. एक लहराई तेर जोर का थपेड़ा मारा, और ये वाला भाग टूट गया. अब तो नाव डूबने लगी. देखिए कितना गमगीन मामला है. एवरीबडी इज लाइक क्या होगा विनय का, राइट? इमेजिन दिस इज व्हाट कैन हैपन इन आवर क्लासरूम. बट एनीवेज, अब ये नाव डूब रही है, और कहते हैं बला आती है तो जोर की आती है. इधर एक और टाइटैनिक, राइट? टाइटैनिक बल आती है, जोर की आती है, इधर भी थपेड़ा मारा, ये वाला भाग भी. अब ये टाइटैनिक नहीं है, ये तो यहाँ की हैदराबाद की चल रही है कहानी. अब ये नाव बिल्कुल सीधी ऐसे रहती थी, अब सीधे डूबने लगी. और कहते हैं, और यहाँ पर विनय एंड टोपी शंकर आर सिटिंग हियर टू ट्राई टू स्टीयर द बोट एंड सेव देमसेल्व्स. बट कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. इधर भी एक लहर आई, और ये वाला भाग भी टूट गया. अब बचने के लिए कुछ नहीं है, तैरना भी नहीं आता, लेकिन उसको टोपी शंकर के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसके पास एक लाइफ जैकेट है, और उसने लाइफ जैकेट पहना दी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर. सी यू सून. So, was it worth it? Let us hear louder for Mr. Manish Jain. But all of them are engaged. So I think it is worth it. So I would call upon our program chair, Sri Naveen Mittal ji, to please come on the dais. And it is an honor. A man with such a practical demonstration deserves something where he's also passing on this innovation and the creative learning, secret sauce for making education engaging and inspiring.
So there is a positive thing, and maybe the Telangana schools and colleges might also have that secret sauce coming into their classes.